ऐसे क्या फैक्टर हैं आज की जनरेशन में, आज की सोसाइटी में, जो हमको ज्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं? जो फैमिली डायनामिक्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल मेंटल हेल्थ में। और वो क्या क्या लाइन होगी जहां हमको ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज अ टाइम टू मीट और टू टेक थेरेपीज? ये एक लाइन है कि जहां पे हमको ये पता करना पड़ेगा कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है। वी नीड अ प्रॉपर डोमेन स्पेशलिस्ट जो हमको प्रॉपर गाइडेंस दे। से ये कहना चाहूंगी, अगर कोई भी तकलीफ तकलीफ जैसी भी लगे, उसको मानसिक बीमारी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। थिंक हाउ मच रोल डज सोसाइटी प्ले इन योर मोल्डिंग ऑफ थॉट्स? कैसे कैसे वो आपको ऊपर लाने में या नीचे ले जाने में? आई थिंक बोथ वेज इट कैन वर्क. Because when we use the word society, we mean everyone. Both our micro system and our macro system. Macros, okay. हर एक इंसान जिम्मेदार है एक दूसरे की मानसिकता के लिए, जिनसे आपकी बातचीत बैठती है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि ये थेरेपिस्ट हमारे लिए बेस्ट है, या वो क्या 3-4 बातें होंगी जो ध्यान में रखना भी चाहिए? क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि साल भर से आप थेरेपी ले रहे हो एंड यू आर नॉट रीचिंग टू दैट पॉइंट, और यू आर नॉट फाइंडिंग दोज इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ. सो व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? मन एक ऐसा कमरा जहां सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर भी वहीं होता है। हम रोज दुनिया से तो बोलते हैं आई एम फाइन, पर क्या कभी अपने मन से पूछते हैं आर यू ओके? मन ने बहुत कुछ सहा है खामोशी में, हंसते चेहरे के पीछे आंसू गिनता रहा, सबको संभालते संभालते खुद को कहीं पीछे छोड़ता रहा। मन थकता नहीं है काम से, मन थकता है उम्मीदों के बोझ से। हर बार स्ट्रांग दिखने की कोशिश में मन खुद को छोड़ता रहता है पीछे के रोज से। मन चाहता नहीं है हमेशा जवाब, कभी कभी बस सुना जाना चाहता है, नसीहतों से नहीं, 2 पल की समझ से मन फिर से जीना चाहता है। कितनी अजीब बात है ना, दुनिया तो हमें पहचानती है सिर्फ हमारे काम से, पर मन हमें पहचानता है सिर्फ हमारे दर्द से। मन अगर बोल पाता तो सिर्फ इतना ही कहता कि हर रोज मजबूत दिखना जरूरी नहीं है, कभी कभी कमजोर दिखना भी इंसान होने की ही निशानी है। तो अगर आप आज मुझे सुन रहे हैं तो 2 पल के लिए रुकिए, थमिए और अपने मन की बात सुनिए। क्यों? क्योंकि मन को सुन लिया जाए तो जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगती है। आज की इस तेज रफ्तार की जिंदगी में हम अक्सर बाहर की सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या क्या शोर मच रहा है हम उसे सुन ही नहीं पाते। हम मुस्कुराते तो हैं, रोजमर्रा की जिंदगी भी निभाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इमोशनल स्ट्रगल का शिकार बन रहे होते हैं। और इसी वजह से मेंटल हेल्थ पर बात करना आज कोई चॉइस नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। हमें बहुत गर्व और सम्मान के साथ आज डॉक्टर अपराजिता खन्ना का स्वागत करने का मौका मिला, जो एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी और एमफिल कर चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग विच इज रजिस्टर्ड बाय आरसीआई अंडर एनआईपीसीसीडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी अचीव किया है, और एक नेशनल मास्टर ट्रेनर है जिन्होंने अक्रॉस इंडिया अभी तक 580 प्लस ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं। डॉक्टर अपराजिता खन्ना इंटरनेशनल एडोलेसेंट लीडरशिप समिट 2025 का भी हिस्सा रही है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ICSSR ने आयोजित किया था। इसके अलावा साल 2018 में एक्सप्रेशन इंडिया के इंटरनेशनल एडोलेसेंट समिट में भाग लेने का भी मौका मिला, जहां उन्हें हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के साथ मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायक बात है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेंटल हेल्थ को लेकर उनका नजरिया हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारे आसपास लोग कैसी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमें खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो आइए आज के इस खास एपिसोड में खुले मन से सुनते हैं और सीखते हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़े उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आज भी बात करने में समाज झिझकता है और हिचकिचाता है और कहीं ना कहीं बात नहीं भी करना चाहता है। सो विद ऑल माई हार्ट्स आई वेलकम हर ऑन दिस शो, Dr. Aparajita. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so now that we are here for talking about mental health, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ पे आज लोग कितना बात कर रहे हैं, कितना कंफर्टेबल है, और क्यों बात करना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के बारे में? जहाँ हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, अ, एक एक पहल है ये। एक पहल है जो बहुत सालों से बनती आई है, समझना चाहा है लोगों ने। कुछ ने बंद दरवाजों में अपने आप को कहने की कोशिश करी है, कुछ ने आके बाहर अपने बातों को रखा भी है।
ये जो सफ़र रहा है मेंटल हेल्थ का, जितना मैं भी परख पाई हूँ और थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो ये है कि ये एक एक ऐसा साइलेंस है, ऐसा चुप्पी है, ऐसा बातों का खेल है, जहाँ कभी कभी शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सो कोई अपने दुखों में खोया हुआ होता है, कोई एक चेहरा बना के चल रहा होता है, कोई जिंदगी में अपने आप को ही ढूंढ रहा होता है, कोई ना चाहते हुए भी जिंदगी का सब कुछ होने के बावजूद भी महसूस कर रहा होता है कि क्या रह गया है। तो जहाँ हम अवसाद, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता, बहुत सी मानसिक परेशानियों की बात करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस रास्ते में हम काफी दूर दौड़ते हुए आए हैं। और आजकल के नौजवान, खास तौर पे जब मैं युवाओं की बात करूं, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की अहमियता को समझते हैं, उसकी जरूरत को शेयर कर पाते हैं घर वालों के साथ। और कहीं ना कहीं it is very true that people's mind is changing. Not, I'll say, very drastically, but yes, in a much better frame that they are coming forward. सो हम ये बोल सकते हैं क्या कि यंग माइंड्स ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस के साथ एज कम्पेयर टू एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले वाले लोग? इस दोनों बात के दो पहलू हैं। एक ये बात सही है कि यंग माइंड्स आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, समझ रहे हैं कि मानसिकता की क्या ज़रूरत है। लेकिन देन देयर इज अनदर पॉइंट दैट दे समटाइम्स गेट लॉस्ट इन दीज वर्ड्स, यू नो। जब एक उदाहरण देती हूँ आपको, कि अगर कोई बच्चा एक टीचर के पास जाता है, तो हो सकता है शायद में बेचैन महसूस कर रहा हो, लेकिन वहाँ पे aggravation of feeling what I'm feeling, like I will have panic, I'm feeling panicky, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा अपने आप को। कहीं ना कहीं ये बात है कि क्योंकि शब्द नहीं है, एहसास है, तो बहुत ही ज्यादा उस चीज को रिटैरिएट भी बार बार बच्चा करता है। और रही बात उसकी, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कई दफा ऐसा हुआ है जहाँ सर्टेन पॉपुलेशन दे हैव बीन वेरी रिजिड विद देयर थॉट प्रोसेस, कि नहीं, अभी भी सवाल उठाया जाता है कि क्यों साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, क्यों साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, घर में हम सब हैं ना, तुम पागल हो, ये गलत है, हम समाज को क्या बोलेंगे, मैं अपने ऑफिस में क्या बोलूंगा कि मतलब मेरा बेटा साइकोलॉजिस्ट से मिलता है। सो देर इज दिस फिनोमेना, बट to my understanding, people are trying to come little forward. They're coming forward, they're breaking these norms, they're breaking these these shadows, and they're talking about their self. आत्म यही से दर्पण जिसे हम कहते हैं, वो हो रहा है। या यही से मुझे एक सवाल आ रहा है कि हम वैसे भी रोज की प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, डिप्रेशन भी फेस करते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी हैप्पी भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। पर वो क्या क्या लाइन होगी जहाँ हमको ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज़ द टाइम टू मीट और टू टेक थेरेपीज? ये एक लाइन है कि जहाँ पे हमको ये पता करना पड़ेगा कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, वी नीड अ प्रॉपर डोमेन स्पेशलिस्ट जो हमको प्रॉपर गाइडेंस दे। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर कोई भी तकलीफ तकलीफ जैसी भी लगे, हम्म, उसको मानसिक बीमारी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम्म, Now the model from illness had changed to well-being, where people can come out and they can talk about their emotions and their feeling, despite understanding that what my diagnosis is, मतलब हम्म, क्या शमशेद में क्या है, लेबल की जगह बहुत जरूरी है अपने आप में वो कोपिंग स्किल्स, वो क्षमता बढ़ाने की कोशिश करना। तो हम कहते हैं, व्हाई डू यू नीड थेरेपी इज व्हेन द फंक्शनल इम्पेयरमेंट हैपेंस। जब कोई भी विचार, कोई भी स्वभाव, कोई भी मन की ऐसी दुखद बात अगर आपको पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करे, उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो, उसकी इंटेंसिटी अधिक हो कि हम संभाल ना पा रहे हैं, तब ये ना बोलें कि चलिए वक्त चला जाएगा तो बात भी चली जाएगी। कई दफा प्रोफेशनल हेल्प एक इमोशनल कंटेनर, एक इंसान जो आपको जज ना कर कर तुमको गहराई में समझकर तुमको एक फैसिलिटेट, एक रास्ता दिखा सके, बस वही। या फिर एक पैटर्न बनने लगे। बिल्कुल, पैटर्न विल बी राइट। मोर लाइक कि वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा आ रहा है। हम्म, हम्म, हम्म।
दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्रेट पॉइंट कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमको ज़रूरत है थेरेपीज़ की। तो एटलीस्ट फॉर आवर व्यूवर्स हम बोल सकते हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ में जनरल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन पाएँ कि आप अपना जनरल रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे या यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है ये हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी है कि एटलीस्ट हम ऐसे लोगों से नाउ वी आर एक्सपोज टू एक्चुअली थेरेपिस्ट कि हाँ हम जाके बात कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु इज़ dealing with mental issues, rather I feel every person at some point of time regularly should talk to some person who is actually a specialist in this psychology thing, because आपके विचारों को वो शुद्ध करने में बड़ा मदद करते हैं and I do believe in that. So okay, moving ahead, मैम मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अभी आज की जनरेशन में मेंटल हेल्थ ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है, पहले नहीं हुआ करती थी। किस हद तक ये, पहली बात तो आपके समझ से सही है कि ये सिर्फ आज की जनरेशन का टॉपिक है या पहले इतना कॉमन नहीं था? और अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है? ऐसे क्या फैक्टर हैं आज की जनरेशन में, आज की सोसाइटी में, जो हमको ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ सिंस 1940s 50s 70s हैव बिन देयर। ऐसी किताबें रची नहीं गई हैं, ऐसी किताबें बनी नहीं गई हैं। हमारे बहुत जाने माने इंडियन साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट हैव गिवन इट टू द फील्ड। Yeah. कहने का मतलब है, अगर हम ओपननेस की बात करें, बीइंग ओपन अबाउट दिस टॉपिक, बीइंग ओपन अबाउट दिस मैटर, now I would say people are more open. People are more willing to, because of the information provided to them, the exposure that they have got from their school, from their peers, from the surrounding. And I, as we all know, कि फोन सबके हाथों में है, तो सबको जानकारी है चीजों की, बट कितनी है, कैसी है, उसके लिए we see people reaching out to professional help more. एक और बात बहुत खास देखी गई है, आई लाइक टू ऐड हियर इफ आई कैन थिंक ऑन दोज लाइन। जो फैमिली डायनामिक्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ में। जहाँ पे हाउ? हमने परिवारों को न्यूक्लियर देखा है, छोटे परिवार देखे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं शेयरिंग भी कम होती हुई देखी है, एक्सप्रेशन भी कम होता हुआ देखा है, कि दे डोंट हैव पीपल व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, देयर इज वन चाइल्ड, नो सिबलिंग ऑल्सो, then those children do not find the space to talk. But when we look at joint families, big families, so if father is not available, they reach out to a tauji, they reach out to a chacha, a mama, someone in the family, and they're able to talk, because they are available in physical space. So again, this has pros and cons, that कभी कभी किसी के मौजूदगी में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, ट्रिगर्स बहुत होते हैं, बट शेयरिंग करने के लिए भी जब हमारे को जने ज्यादा मिल जाए, लोग ज्यादा मिल जाए, तो लोगों के घड़े खुलने लग जाते हैं। सो फैमिली हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, आई ऑलवेज से, इन मेंटल हेल्थ। मैम मुझे यहाँ से एक बात याद आ रही है। मैं अक्सर एक बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हमारी जनरेशन पूरी ज़िंदगी ये कोशिश में लगी रहती है कि हम कैसे लोगों को छांट दें अपनी ज़िंदगी से, और आखिरी में जब वाकई कोई नहीं बचता तो हम बोलते हैं हम काफ़ी अकेले हो गए। तो मे बी हम यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज ड्राइव कर सकते हैं कि थोड़ा सा फ़ोन को साइड में रख के लोगों पे फोकस, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा ओपन हो, थोड़ा सा लेट्स बी ह्यूमन इफ वी आर ह्यूमन, एंड ह्यूमन आर बाउंड टू बी ऑन द सोसाइटी, राइट? Absolutely. This reminds me of one line, you know what, very commonly heard. खोल देते दिल यारों के साथ, तो खोलना नहीं पड़ता डॉक्टर को औजारों के साथ। Hypertension, all kinds of problem, they have emerged because of stress and anxiety. And if we have people to talk to, open our heart to, it feels very light. एक्चुअली आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइटर एंड आई एटलीस्ट गेट माई लेसन कि थोड़ा सा बात करना अपनी फैमिली में, बीट योर हस्बैंड, बीट योर मदर, पेरेंट्स बेसिकली, और योर सिबलिंग्स, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा उनसे जाने उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और अपनी भी बताएं कि ये चल रहा है। कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं है कि इंटेंशन के साथ बात की जाए, बात तो कैसे भी कर सकते हैं, और जो पहले होता था। सो यहाँ से मेरा तो एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ है कि फैमिली इंटरेक्शन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, फैमिली वी आर क्लियर विथ, हमको ये समझ में आ रहा है कि फैमिली का तो अच्छा खासा रोल है ही। बट मैम व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच रोल डज सोसाइटी प्ले इन योर मोल्डिंग ऑफ थॉट्स,
कैसे कैसे वो आपको ऊपर लाने में या नीचे ले जाने में? आई थिंक बोथ वेज इट कैन वर्क, बट आपके हिसाब से क्या Right. काम करता है वो? True. I think society, when we use the word society, we mean everyone. Both our microsystem and our macro system. मैक्रोस, ओके। हर एक इंसान जिम्मेदार है एक दूसरे की मानसिकता के लिए, जिनसे आपकी बातचीत बैठती है। तो जब सोसाइटी की बात करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स आवर ऑक्यूपेशन, आवर वर्क एरिया, आवर नेबरहुड, आवर एनवायरनमेंट इन जनरल. We say that society do have a role to play, very significant, because we are part of that society. The whole point is this, that society will be there to maybe lift yourself, but you have to lift yourself up first. करेक्ट। You have to recognize, you have to identify your own emotions, your own self. Then I think society also helps you somewhere to open those doors and windows to seek or to support you in help. But अपना रास्ता गाड़ी का खुद इंसान को चलना पड़ेगा, चाहे रास्ता कोई और दिखा दे, लेकिन चलना खुद चलना तो पड़ेगा। पड़ेगा। तो उसमें आप ही मेन ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आपके साथ कंडक्टर कोई भी बैठ सकता है, बट यू आर ड्राइविंग द लाइफ ऑफ योर्स. So you should have that steering wheel in your hand, and no matter society be there, and as much as they be there, you have to encourage and appreciate yourself first. Correct, correct. Even to seek help, you have to help yourself to reach to that situation. This is a great True. point, मैम। और अच्छा, एज के साथ आपको लगता है कि जैसे आपके पास टीनेजर्स भी आते होंगे, आपके पास छोटे बच्चे भी आते होंगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ कॉमन पैटर्न इन एडल्ट जनरेशन, टुडेज एडल्ट जनरेशन? आपको क्या लगता है वो क्या कॉमन चीज़ है जो निकल के आ रही है कि यार ये फैक्टर तो काफ़ी कॉमन है, जो बहुत सारे लोग बाय लार्ज कंप्लेंट करते हैं, या समझ में आ रहा है कि इस फैक्टर के कारण ये लोग काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं? I think these days we have been, me along with many of these psychologists that we meet and talk, I think the most common thing we are coming across is a lot of relationship issues. You know, having, in the adults yeah, or in the teenage, or in what the age group? in the young adult age group, Mhm. and even I mean middle adulthood, where Okay. extramarital Mhm. affairs, or having a very hostile relationship. We are seeing the pattern of that's again, it stems from somehow from family dynamic, that चीजों का नजरिया काफी हद तक बदल रहा है. We are also the distress tolerance जिसकी हम बात करते हैं, वो भी कम हो रही है, क्षमताएं कम हो रही हैं. तो if anything, for example, is not happening right, in the nature to make it correct, to make it better, to negotiate, to compromise, to also teach the other person certain skills, we don't largely go on to this phenomena, but we just walk out, we just Yeah. avoid, we just close the chapters, we Close just the chapter. close the book, rather, I would say. So I think a certain ability to walk together in life in terms of relationships, interpersonal relationship with your family, with your colleagues, that is one area that I have personally felt after COVID has become very sensitive point of knowing people. And why do you think कि tolerance level इतना कम क्यों होता जा रहा है? Like I said, people are lacking patience. Hmm. We have shortcuts, we have immediate gratification of everything. कुछ चाहिए तुरंत पूरी हो जाती है. तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी तुरंत ठीक हो जानी चाहिए. But I think problems and difficulties are something that you have to navigate in life. Yeah. And if it is with the partner or in someone in the family, you should be able to, find the ways to make it better. कि अभी मैं देखती हूँ जो छोटे बच्चों की अपब्रिंगिंग हमारे यहाँ, जैसे नॉट हमारे यहाँ, इवन व्हाट आई हैव सीन इन लार्जर पिक्चर, कि जैसे कुछ भी एक चाहिए चार मिल रहा है, अब 2 घंटे बाद भी चाहिए होगा तो अब भी मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टफ। आपको लगता है क्या कि जो हम अपने बच्चों को इतना फ्रीक्वेंट रैंडम जो अवेलेबिलिटी करा रहे हैं चीज़ों की, एंड वी आर मेकिंग देम फील एज दे आर सुपर प्रिविलेज्ड,
सुपर इम्पोर्टेंट। आपको लगता है क्या कि ये चीज़ चाइल्ड साइकोलॉजी में ही बाद में कन्वर्ट हो रही है इम्पेशंस में, कि उनमें टॉलरेंस नहीं है लाइफ को लेके, कि नहीं ये जैसे अब हमारे टाइम पे हमें कुछ चाहिए भी होता था तो पहले तो वहीं फिल्टर लग जाता था कि ये बोलना भी है कि नहीं बोलना है माँ बाप से, फिर बोल भी हम्म। दिया तो पहले ही एक मन में थॉट रहता था कि ना नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। तो वो लिमिट शायद थोड़ी ज्यादा थी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? लिमिट भी, चीज़ों का ग्रैटिट्यूड भी, और एक्सेसिबिलिटी हो। ऐसा नहीं था कि चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, पहले थी, करेक्ट। बट उसको लेकर थैंक यू होना और महसूस करना, अरे वाह, गॉट इट, आई वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, हम्म। दैट फीलिंग वाज आल्सो समथिंग दैट द चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम द environment. He करेक्ट। picks up from the behavior of his own her own parents. And I think being impatient about it comes very much from how everyone in the environment around that person also reacts. So मुझे लगता है हमारी जो टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, अगर वो ज़्यादा है और रिस्पॉन्ड करने की कम है, तो हम कई दफ़ा देखते हैं कि चाहे चीज़ बहुत अच्छी भी हो, तो मन से निकल के शायद बच्चे के या किसी इंसान के तुरंत नहीं आता थैंक यू। हम कहते थे कि एग्जैक्टली। शब्द बहुत बहुत ज़रूरी काम करते हैं। शब्द हम्म। आपको बहुत खुश भी करते हैं, बलवान भी बनाते हैं, और आपके को कहीं ना कहीं दबा भी सकते हैं, चीर भी सकते हैं। तो हम कहते थे कि थैंक यू बोलो, नमस्ते बोलो, ग्रीट करो, ये सारा बहुत बैठता था पहले। अब what what I have been seeing is even a child sitting in another room is going to drop a message on the phone of the parents and say, "Mama, खाना अंदर भिजवा दीजिए, मम्मा राइट। पानी ला दीजिए." So the talking, human interaction has gone away. It's slightly gone या than इट्स how सैड। we used to have. That's why the dynamics that you're talking about, they stem from there. इट्स सैड, इट्स सैड। मुझे लगता है कि मैं इसमें सच में बिलीव करती हूँ कि अपने बच्चों को दो चीज़ें देने से पहले एक बार ये थॉट प्रोसेस में ले आओ कि ज़रूरी है दो देना या एक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें राइट टाइम पे अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की, तो उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा तो होती है और उनकी यूजेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे मिली है ये चीज़। आई आई वही है, आपने एकदम सही कहा कि कितना इंसान को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल टू यू। आई नो, इन वन ऑफ माय एक्सपीरियंस, पूरे घर के इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर नहीं लगा, लेकिन उस इंसान का PS4 बंद ना हो जाए, ओ। उसके लिए एक जनरेटर स्पेशल लगा है कमरे में। ओके। So, imagining, and then we have concerns that the child is not moving out of the नॉट मूविंग। house, child is not करेक्ट। going to the schools. Why would he go if he has everything on his platter two, three, ऑफ four कोर्स। times? You know, the essence of hard work, the essence of doing things by yourself, then relishing the small, rewards that you get after that. If we lack on it, then we miss out on lot of important things. या सो इट्स राइटली सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वहां तक पहुंचना ही क्यों है, पहले ही अपनी अपब्रिंगिंग या चाइल्ड के लिए अपनी अपब्रिंगिंग का एक पार्ट बनाओ कि उसमें टॉलरेंस भी हम जनरेट कर रहे हैं, सहन शक्ति भी है, थोड़ा सा ना सुनने की भी क्षमता है। मुझे लगता है द वन थिंग विच मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट वन थिंग विच अवर जन आई मीन वन नेक्स्ट जनरेशन टू अस इज लैकिंग इज टू हियर नो। दे कैन नॉट टॉलरेट एनीबडी और everybody saying them no. No is something which they are not able to take. और हमारे टाइम पे no was a common thing, and then when you get, then you are happy, oh I got that. And Hmm. I feel that was okay to be there, इसलिए adaptability थोड़ी generation की ज़्यादा थी उस टाइम पे। Mhm. Also, I feel not about young generation versus old generation, but ना सुनने की क्षमता बच्चा भी वहीं से पिक करता है जहाँ उसने देखा होता है कि अगर father is saying no to a mother for something, the mother is adamant in front of the child about something that the Yeah, father has said. this is actually a So, great point. yeah, so I don't feel that it's about generations. I have felt pattern of rigidity
इन ऑल एजेस एक 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 किशोर अवस्था की रिजिडिटी को तो हम भावुकता भी समझ सकते हैं, और हार्मोनल भी समझ सकते हैं, और स्टबननेस समझ सकते हैं, जो एक वास्तव में किशोर अवस्था में दिखती है। एक 40 साल और एक 50 साल से भी अगर सेम पैटर्न दिख रहा है, तो क्या उम्र के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ, क्या मैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपना पाया, या मेरे पैटर्न्स उम्र के साथ 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 रिजिड ही होते गए, है ना? करेक्ट तो करेक्ट ये नजरिए बड़े फ्लूइड हैं, दे आर वेरी फ्लूइड एज अ कॉन्सेप्ट। बहुत सब्जेक्टिविटी है वास्तव में देखा जाए तो। मैम, जब आपके पास कोई थेरेपी के लिए आता है, आई हैव अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, जब आप बात करते हैं तो यू टेंड टू हेयर, और आपको वो पूरी समझ में भी आती है और आप उसको अपनाना भी चाहते हो, बट क्या ये आपको चैलेंज लगता है कि दैट्स नॉट गोइंग इन अ परमानेंट वे? थॉट प्रोसेस को परमानेंटली शिफ्ट करना, आई फील इट्स अ टफ थिंग। तो आप क्या चैलेंज फेस करते हैं कि ये परसुएड हुआ है, ये अभी तो बात मान गया है, बट इट्स नॉट गोइंग इन दैट परमानेंट डायरेक्शन? उसके क्या चैलेंजेस है आपके लिए वो? तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, थेरेपी इज नॉट अबाउट एडवाइसिंग, हम्म थेरेपी इज नॉट अबाउट परसुएडिंग, हम्म थेरेपी इज ओपनिंग द doors for a person who have come to seek help, the doors that he has never touched about, the things that he has never ever spoken to himself or to someone about, the things that he has battled in the shut doors. Therapy is about helping the person to recognize what more strength he has, what more coping abilities he has. He is far more greater than his difficulties and problems. He करेक्ट has achieved so much in the past. He has been able to walk so much through the life now that it is never about the persistent pattern and the rigidity, but more about, if the volume of those rigidity was 100 in my head, is it 40 now? Is it 60 now? We can't change the absolute personality of anyone. I think it is by far a false concept. We can help the person to know that he's capable of other way of thinkings also. करेक्ट, He is दिस इज अ capable of other behaviors as well, which are very positive in nature. And we show them that. So sometimes they practically apply, sometimes they refrain, sometimes they go back to their same way of behaving. And sometimes when they see the results of new behaviors, they start adapting it. So therapy is a good बेसिकली, long concept. या बेसिकली ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि आपके अंदर ही अच्छाई भी है, बुराई भी है, आपकी स्ट्रेंथ को ही रियलाइज कराने की प्रोसेस है थेरेपी। और जब आप अपने अंदर का पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोकस करते हो, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा लूज करते चले जाते हो, और वो प्रोसेस ही है थेरेपी का सेशन बेसिकली। बट आई एम श्योर बिल्कुल। कि हर थेरेपिस्ट हर इंसान के लिए नहीं होता होगा। I mean, like, I'm enjoying talking to you. I'm wholeheartedly saying everything to you, but might be possible with some other person I may not be in that comfortable space. तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि ये थेरेपिस्ट हमारे लिए बेस्ट है, या वो क्या तीन चार बातें होंगी जो ध्यान में रखना भी चाहिए? क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि साल भर से आप थेरेपी ले रहे हो एंड यू आर नॉट रीचिंग टू दैट पॉइंट, और यू आर नॉट फाइंडिंग दोज इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। सो व्हाट इज दैट Yeah. पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? I think I really agree with you that, just how you pick your favorite car that you like to drive. Similarly, I think you pick your therapist. करेक्ट And there could be certain personality traits in the therapist themselves that the client can be very attached to, or rather not attached, but more inclined to, you know. So it is like I said, the therapy itself, the contraindication of therapy is that जरूरी नहीं है कि हर इंसान को काम करेगी. There are certain clients who look something else, in the therapy. And it is a very good of a therapist if they adapt it. If they, for example, are unable to adapt, then the client themselves, they reach out to the other therapist. So it's more like how you connect with the person. And जहाँ हम थेरेपी की बात करें कि क्या वो
जरूरी चीजें थेरेपिस्ट के लिए, वो आई एम श्योर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल पीपल हु वुड बी वाचिंग लिसनिंग टू अस who are in this field, they know that the most important component of therapy always lies in empathy. कि आप किसी भी इंसान जो आपसे मदद लेने आ रहा है उसके नजरिए को उसकी तरह समझें, उस तरह नहीं जिस तरीके से समाज समझता है। उनके कहते हैं उनके जूतों में पैर डाल के देखें कि उनको वो कैसा महसूस हुआ होगा उस वक्त। और ये अगर कोई बट समझ मैम पाता है। आपके पास भी तो डिलेमा होता होगा, कभी कभी आपको बहुत क्लियर दिख रहा होता है कि मे बी कि नहीं ये थॉट प्रोसेस तो गलत ही है, लेकिन यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। तो वो डिलेमा आप अपने लेवल पे कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको क्लियर आप दिख रहा है कि बंदा गलत सोच रहा है, बट देन अगर आप क्लियर बोलोगे तो मे बी इट कुड नॉट वर्क इन दैट वे, राइट? देन हाउ डू यू डील विद दैट? empathy you're having with the state of mind, with the feeling that the person is having. For example, I can have a feeling that सब कुछ खत्म हो गया है जिंदगी में, क्योंकि मैं इसमें फेल हुआ, उसमें फेल हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक थेरेपिस्ट वो भावनाओं को समझेगा कि ये क्या महसूस कर रहा है कि ये फेल हुआ है। वहां मैं ये नहीं कह सकती एज अ थेरेपिस्ट कि ये आप गलत सोच रहे हैं जी, ये ठीक नहीं है। देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ थेरेपिस्ट, एग्जैक्ट, दैट्स व्हाट आई राइट? वांटेड टू अंडरस्टैंड हियर। बट जब हम एम्पथी की बात कर रहे हैं, एम्पथी में मैं उसके जूतों में पैर रख के उसकी भावनाओं को समझ रही हूँ, वो गॉट इट। एम्पथी है। और जहां हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं, थेरेपी इज नॉट अबाउट थेरेपिस्ट ओनली टॉकिंग इन द थेरेपी। Therapy is about the collaboration between the client and a therapist, where we generally desire or require or need or encourage the client to talk by themselves, to express, to ventilate, to do a catharsis, and that becomes a huge way to recovery, to healing. या एक्चुअली एक बहुत अच्छे दोस्त का काम भी करता है थेरेपिस्ट, आई फील कि जो दुनिया से आप बोल नहीं पाते या आप झिझकते हो, आप अपने बिकॉज यू नो नोबडी इज जजिंग यू, आप अपना दिल खोल के बोल रहे हो कि व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, रादर देन विद द फियर ऑफ गोइंग कि कोई जज कर लेगा, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। आपके आपके True. आप तो रोज थेरेपी लेती हैं, यू हैव कंडक्टेड ऑलमोस्ट 600 ट्रेनिंग सेशंस, तो मैम कोई एक ऐसा केस जिसने आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि यार व्हाई द सोसाइटी इज गोइंग इन सच बिहेवियर और दिस पैटर्न, कोई एक ऐसा केस जो आप यहाँ पे बताना चाहते हैं? केस तो नहीं, मतलब किसी की मनोदशा को एक केस ना समझते हुए एक जिंदगी की नजरिया जो रहा है, वो या अगर मैं कुछ रखना चाहूंगी तो एक बहुत अराउंड 12-13 साल की अ, बच्ची थी। एंड मैं एक दूसरी स्टेट में गई थी ट्रेनिंग लेने। ओके। तो आई डोंट नो, मतलब जैसे कहते हैं कि आपको बच्चों को एडोलेसेंट बिहेवियर सिखाने होते हैं, सेफ अनसेफ टच, सेक्स एजुकेशन, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब निकल के आ रहे हैं और उभर के आ रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ 3 आवर्स, जीवन कौशल शिक्षा लाइफ स्किल से संबंधित थी। आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ 3 आवर्स, आई रिमेम्बर आई वॉज मूविंग आउट ऑफ द auditorium and I saw the girl standing in the school uniform. She had attended the training, was waiting for me, ओके। and she said, "Ma'am, I want to speak to you." And I said yes, and I was going to a principal's room to have cup of coffee, after training, like how we sit and we discuss important nuances of behaviors. But she said, "Ma'am, I want to speak to you." I said, "Yes, tell me." I was thinking that she'll maybe encourage and say, "Ma'am, I really liked your session." The common views that we get, which are very encouraging for the trainers as well. She said that, "Ma'am, I don't think I want to go to my home. I don't want to go back to my home." I said, "Okay." Yeah. She said that she doesn't want to go back to her home. I said, "Okay, okay. So where would you want to go?"
She said, anywhere but not home. Okay. Then my antennas just changed. My thoughts changed immediately. And I said, would you want to express more? And I had just given an eye to a teacher saying that I'll take some time with her if I can, if it's allowed. Hmm. And they said, yes, ma'am. Do you need Sorry some to interrupt space? you, but And I, how old was she? 12 years, I said in the 12 beginning. years. Oh, Yeah. okay. I Hmm. sat with her. Yeah, I sat with her. There were several underpinnings of her family that she shared, several experiences that she told me, which happens in the rooftop room Okay. with one of the known aunt. And she said that it doesn't make me feel safe. So she will be coming today again. It's Saturday. She comes every Saturday, Sunday, and she plays a special game with me. So I don't want to go back home. And Open with the knowing girl. yeah, This is and knowing in today's session, we learned something very important about boundaries, about assertiveness, about refusal skills, about how to express yourself, how to cope with your emotion. I felt this raised a point of understanding that one can speak loud. So when she reached out, I reached out to the principal seeking her permission of the child. I informed the child that can we have a dialogue with the parent? Yet parents have been unaware because they both were working. hmm hmm And when the things happened, I was very happy to know that just not a mere regular therapy, but a general awareness and sensitization session open the abilities in a person and could actually come up and talk. And I think this is what we need. We need awareness. We need people to come up and to talk and to share and to know Exactly. that what is acceptable and what is not. So this has been one very, it was a very sudden thing for me. Not that there are so many stories of people's personal life that I can actually have a flashback about when you ask these questions. But this was one very, very relevant because we had a very fun activity also. Like we were laughing in the training session. I was literally making all of them dance on a song of Dear Zindagi. And towards the end, how you kind of give Exposed to a reality, real summarization to world. a, Okay. yeah. So कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बड़े बहुत सारे घड़े भरे हुए हैं, तो आपको नहीं पता कि आप कब किसके घड़े में एक्चुअली मदद कर दे खुलने में और किसी का रास्ता शायद थोड़ा और साफ करते हैं। मैम ये तो ये मुझे अपने अपने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग पे ले गया कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि इतनी बात करो या इतना इसको कॉमन कर दो कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो तो उसको ऐसा ना लगे कि वो कुछ बहुत बड़ी बात कह रहा है। इट हैज़ बिकम अ वेरी कैजुअल थिंग कि नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता ये सही है। एंड व्हेन यू से दैट यू डोंट फील समथिंग इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन यू पॉइंट आउट द रॉन्ग डायरेक्शन। तो वो सोसाइटी के सामने एक एक्सपोजर होता है, एक एक्सपोज होती है चीज़ें। और इसलिए मुझे लगता है अपने बच्चों को आप किन से एक्सपोज करा रहे हो, कौन वो लोग हैं जो उसके आसपास है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक वी शुड बी ट्रस्टिंग एनीबडी इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि यू नेवर नो। अब उस बच्चे के पेरेंट्स ने तो नहीं सोचा होगा, बहुत भरोसे पे ही रखा होगा ना कि नॉट दैट दे हैव थॉट ऑफ कि 12 साल की बच्ची के साथ एक वुमेन ही ऐसा कुछ कर सकती है। बट दिस इज़ अ ट्रू। ग्रेट लेसन फॉर अवर व्यूअर्स एज वेल कि अपने बच्चों को किसी से भी एक्सपोज कराने से पहले 100 बार सोचे कि वो इंसान ठीक है या नहीं है। खुद से परख भी ले, कोई बुराई नहीं है, परखना बहुत बढ़िया है। ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। समझ लो, जान लो, और फिर अपने बच्चों को किसी से एक्सपोज कराओ। व्हाट डू यू थिंक मैम, ये सब सब जो इंसिडेंसेस हो जाते हैं लाइफ में बच्चों के, आई एम श्योर बीइंग अ गर्ल इवन, uh, we I think that's a general statement I should not be stating, but being a girl I myself might have faced certain things in life। मगर मैं ये आज भी समझना चाहती हूँ कि ये जितने भी इंसिडेंसेस एक लड़की के, नॉट दैट लड़की के साथ या बच्चे के साथ इन जनरल होते हैं, ये बाद में आपके एटीट्यूड शेपिंग में कितना रोल प्ले करते हैं? आपको बहुत क्या लगता है? बहुत I we have felt that a general exposure to sexual instances in the हम्म early phases of your life
can actually make you vulnerable to many personality issues in future. Sometimes, if it is something unwanted and distressful, it makes it very difficult for you to have own sexual relationship with your partner in future when you're married. So, Correct. I felt it that a person who's abusing and a person who's getting abused both need psychological help. We Yeah. don't look at only the person who's a victim or who has survived it needs more help. I think it's everyone who needs help. And why it's important is to give also to the help the person who is doing certain acts is because A, they do not repeat it, Right. and B, they realize that the impact of your act has psychological effects on the other person's life. And it is nothing but just coming from their own, history of lot of experiences, negative experiences that have formed them to be this way. सो Yeah. बहुत इश्यूज हैं अगर आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बात करें. Lot of complaints that comes to gynecologist about not having children is also not having those sexual activity properly. It stems from psychological stress, psychological distress of something that is, maybe one breakup that a person had on the accounts of getting married to someone, but the person has only used the other partner. That partner will find it very difficult to form any other kind of a relationship in future Of with their course. own partner. So it stems from a lot of these kinds of perspectives. सो जस्ट टू सम अप, हम चीज़ों को सेग्रीगेट करके देखते हैं, मेंटल हेल्थ देन अदर थिंग्स, बट आई फील दिस इज ऑल लाइक होलिस्टिकल, मतलब सब कुछ बहुत जुड़ा हुआ है आपस में. आप अपनी Hmm. जनरल वेलबींग पे अगर फोकस करेंगे, अपने थॉट्स पे भी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, तो आई थिंक दैट विल वुड प्ले अ रादर बिगर पिक्चर रोल, shaping your attitude and going in positive direction. And what do you feel, thinking positively or negatively, how much does it affect your affinity to go into Go into depression? I mean, affinity to go if into I dip. depression or mental issues. For example, let me explain this by an example. जैसे मैं अगर जनरल लाइफ में बाय लार्ज पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं जनरल लाइफ में बाय लार्ज आई फोकस मोर ऑन, नहीं ये नहीं हुआ, नहीं दिस कुड हैव बीन डन इन दैट वे. तो ये जो जनरल एटीट्यूड है, ये कितना मदद करता है आपको कि जब आपके सामने सच में ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन यू विल फॉल इनटू दैट स्टेट ऑफ डिप्रेशन और कुछ भी इश्यूज हो, तो कितना आपका खुद का एटीट्यूड रोल प्ले करता है उससे लड़ने में? Hmm. I think the very first thing that you asked was about the mind body, you हम्म. know. That is mind different from our body, or how physical, mental health are, important, relevant. Yeah. I think they both are completely linked with each other. I'm sure someone having fever will not be, woohoo, I'm so happy I have fever. I'll have Dolo today. You feel low. You Yeah. feel low, right? But every low feeling does not mean depression. Yeah. So when we say that the persistence feeling of low, it starts impairing your functioning. Every day you're getting up with blues. Every day you're like, no, I don't want to push myself. It takes too much for me to do this. I'm unable to do it. Then we say, oh, is it looking like a depression? Is it looking like something because the person has not gone to school for 6 months? The person has not gone to the office for 3 months. So is it impacting your functioning? Oh, yes. Then we say that your attitudes or your general way of thinking is getting impacted. It is Yeah. getting formed. It is getting overly shaped. That's what calls it having any disorder like depression. करेक्ट. एंड मैम, नाउ यू ऑल्सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एट द एंड ऑफ द डे आप भी कैसे, आप इतना सब आपके पास तो जो भी आता है प्रॉब्लम्स के साथ आता है कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, सो टू मी एटलीस्ट इट सीम्स लाइक एवरी डे यू आर लिसनिंग नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नॉट कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट्स पुट इट दैट वे. आप कैसे उनसे डील करते हैं, एंड हाउ डू यू
मेक श्योर दैट यू गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज अब 10 बार आके कोई अगर मेरे सामने या ये किसी के भी सामने प्रॉब्लम प्रॉब्लम, देन आई मे टेंड टू थिंक इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? हाउ डू यू डील विद दैट? कैसे आप उससे उभर पाते हैं, या अपने आप को कैसे समझाते हैं कि नहीं ये सब ठीक है, बट द लार्जर पिक्चर हैज टू बी कमिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? Hmm. I think we all have our own threshold. We all have our thermometer of knowing how much am I able to give today, how much I can give every day. So not that there wouldn't be any specific situation where we do feel drained out. We do. I mean, COVID, I think, was especially one period of time where we had taken number and number of sessions in a day, and all of them were mostly about grieving, losing someone or the other in the life. I think that did check up our own resilience, our own ability. But I think every therapist is aware of that whenever you feel overwhelmed, take a break. We all also do take a break. We all do realize the importance of relaxation. We know that this is what my personal and my professional life holds. Just as it would be for you to move out of your house, work for 5, 6 hours, do work on the laptop or anything as clerical. Similarly, for a practitioner, for a doctor, it just as that. We move out, we listen to people, 5, 10 people every day, and we come back home, we switch off that button. So, the ability to know how to switch off when you get back into your personal life is very important. And switching on and off does not check your empathy. It gives you an understanding that you need to be empathetic about your own life also. So that Correct. helps us to move forward. No, not only for you, I think this is for जनरल पर्सनालिटी. आई मीन जब भी हमको लाइफ में लगे बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है और वी कैन नॉट टेक दैट, अब इसके बियॉन्ड हमसे होगा नहीं भाई, तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक. थोड़ा सा पीछे मुड़ जाओ, थोड़ा सा सेटबैक ले लो और थोड़ा सा बैठ के सोचो और फिर आगे मूव करो, रादर देन जस्ट हसलिंग और नहीं नहीं हम तो सब कर लेंगे, विच मे नॉट वर्क फॉर यू इवन लाइक दैट. Because I think True. in even in relationship this happens. Sometimes you feel no, I'll be able to do, no, I cannot be complaining, no, I cannot be like this. But sometimes it's better to recognize yourself कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है सहन, तो मे बी मैं थोड़ा सा कोपिंग मैकेनिज्म अपने लिए देख लेती हूँ, एंड देन मे बी आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दिस. Yes, yes. Coping mechanism, as what we are teaching to the clients, to the patients, we are practicing ourselves also. You know, there are times when certain sessions just takes a little more of the energy. We get up, we stretch ourselves, we move around, we take a walk, have maybe a little bit of a green tea or something, get back on our seat. I think Exactly. that flexibility of your own working is needed, irrespective of whatever work that you're doing in life. या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. मैम आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल लोग आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की हम बात कर रहे थे, लाइफ में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हो गए, बुक रीड नहीं करेंगे, बुक की समरी या एक संक्षेप में क्या बोलना चाह रहा है ये रीड करेंगे, विच इज़ एट टाइम्स आई फील दैट्स इवन ग्रेट सॉल्यूशन कि पूरी बुक रीड ना करके यू नो व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू से, द जिस्ट ऑफ बुक यू मे रीड. बट आपको क्या लगता है कि what is the power of using the original path rather than just going through the shortcuts of life? आई थिंक दी ओरिजिनल पाथ, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस में अपने आप को Hmm. समझना Yeah. और उसको एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, उसका अपना ही मजा है. और शायद हम ये समझते हैं जो शॉर्टकट ले रहे हैं, जो जल्दी पहुंचना चाहते हैं, शायद वो पहुंच जाते हैं, उनको उसको पहुंचने की ज्यादा खुशी होती है. बट वो जो प्रोसेस में भी जो अपने आप को जी सकते हैं, वो मे बी पर्सनली नहीं चाहते, या Correct. उसका वो लाभ या लुफ्त उठाना नहीं चाहते. तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, बट रियलाइजिंग व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. If someone likes to buy a book by reading the back page, it's okay. It's You okay. have a choice. Yeah, you have a But choice. I think If it's a anybody difference doesn't between want to, but it's a difference between निखरना और पहुंचना. निखरता तो आदमी हाँ, वक्त लेके ही है, वक्त लोगे तो निखरोगे ही. similarly, exactly, similarly, how it is different from भागना to दौड़ना. किसी करेक्ट. के पीछे भाग रहे हो या दौड़ रहे हो.
या अपनी इसमें भी रेस्पेक्ट बहुत करो, फर्क है। करेक्ट, या एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट पॉइंट आई फील, और ये बहुत बड़ा लेसन भी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि कभी कभी जिंदगी में लंबे रास्ते लेने में कोई बुराई नहीं है, कुछ ना कुछ हम्म, सीख के ही जाओगे, 10 चीजें ऐसी सीखोगे जो आगे के रास्ते शायद छोटे कर दे। तो हम्म, अभी के रास्तों को छोटा ना करना बेटर है, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो, विच इज गुड हम्म, एक्चुअली। सो हम्म, ओके, अब तक हमने बात कर ली कि मेंटल हेल्थ इन जनरल, सोशल लाइफ, सोसाइटी, पेरेंट्स, मैक्रो माइक्रो societies, all thing. But ma'am, I would like to know from your perspective कि when we talk about mental health and women in particular, what role does women health plays in this mental health for women? क्योंकि आई फील वुमेन, अब लड़कियां, अभी देखिए पहले के ज़माने में सोसाइटी का और लाइफ का पैटर्न बहुत अलग था। अभी आपको घर को भी कैरी करना है, यू हैव टू बेयर अ चाइल्ड एज वेल, अपना प्रोफेशनल लाइफ भी चल रहा है, पर्सनल भी चल रहा है। कभी कभी महिलाओं को ये बैलेंस बिठाने में बहुत दिक्कत जाती होगी, एंड बीइंग अ हम्म। वुमन एंड अ मैरिड वुमन आई कैन रिलेट टू दैट। सो हाउ फार शुड आई कीप दैट इन माइंड, और मेरे लिए क्या, मेरे जैसी उन लड़कियों के लिए क्या सजेशन होगा कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ को? ये आई थिंक इज वेरी पर्टिनेंट बट वेरी लेस स्पोकन अबाउट टॉपिक्स। हम्म, जनरली पता नहीं, ये भी समझा जाता है कि औरतों में, खास तौर पे मदर्स में, वुमेन में एक अंदरूनी ही शक्ति सुपर है पावर कि वो या अपने आप ही प्रॉब्लम्स को झेलती भी रहती हैं, समझती भी रहती हैं और अपने आप को खुद ही निकालती रहती हैं। पर आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाउ comes to reality is that it's okay to talk about something that you're not okay with. Even if you're a mother, you're a wife, you're a daughter, or I would say rather even father, son, anybody. If you're not okay with something, please speak about it. Don't assume that the other person from your facial expression will understand and will change the way of processing. It does not happen that way. I think if you're feeling burdened, say. If you can't do it, express. If you feel it's getting too much, talk about it. If you feel that you need more help, support, hands, or something, put it forward. If it is not understood, then we talk about that the person has to be supported in certain manner through an additional help. बट जब बात निकल के ही नहीं पहुंचेगी तो वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में कहाँ बातें आएंगी? I don't know how much we are aware about it, but postpartum is an actual thing. It is एंड not वेरी just लेस being टॉक्ड अबाउट, और आई वुड से not. कि बहुत नेगेटिवली टॉक्ड अबाउट, पीपल डू नॉट Mhm, रिकॉग्नाइज और रियलाइज कि ऐसा भी होता है। mhm. लोग, अच्छा मैम यहीं से एक क्वेश्चन है एक्चुअली, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या पोस्टमार्टम नहीं होता था, पीपल वुमेन वर गेटिंग प्रेग्नेंट बैक देन दोज डेज एज वेल, सो व्हाई इज इट अ हॉट टॉपिक नाउ? व्हाट इज योर say on this? I think earlier postpartum used to be there, very much used to be there. Rather, when ununderstood and not given relevance about it, used to turn into postpartum psychosis. Okay, जहाँ जहाँ शायद औरत अपनी रियलिटी से दूर हो जाती थी। which आज is ये more भी bad. देखा जा, हाँ, विच इज इवन मोर वर्स, बट इट डजंट लुक लाइक डिप्रेशन पर से। बट Yeah, postpartum depression that we talk about is something when a woman is biologically, earlier also, now also, loses her entire bodily functioning. मतलब correct. ये बातें ऐसी नहीं बोली गई हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक औरत का दूसरा जन्म होता है। इट इज ट्रू, बिकॉज हार्मोनली यू आर वॉश्ड ऑफ द इंटायर। जैसे अगर आपका धीरे 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 लीप ऊपर जा रहा था हार्मोन्स का, वो एकदम बेबी होने के बाद ठक करके नीचे गिरता है। तो दैट सडन चेंज इन द बॉडी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी. Mhm. People are aware, so they talk about it, they seek help, they understand the वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड value. रियलाइजिंग दैट सिचुएशन कि एक महिला Yeah, कितने sometimes. चेंजेस से जा रही है। Yeah, sometimes husband also laugh, and I don't know, I get to hear this a lot in my session कि मैम वो ना उसकी those, you those 5 days are going, my she's menstruating right now, so it's okay. I understand as a husband that it is why it is. Similarly, men also talk about that, she has done a very big thing now. Even if she gets
very agitated or irritated and pushes me off or says something, I'll try to understand. I mean, we've seen very empathetic fathers also. And Right. some also says कि इतना बड़ा काम कर दिया, इतना भी बड़ा काम नहीं करा है, मेरी माँ ने तो 4-5 बच्चे करे हैं, इसने तो Exactly. एक में ही करके ऐसे हो. So we get different. It is the kind of an environment that a woman is able to get. So that's why we say the woman's mental health is not about the mental health of the woman, but also the mental health of the people around the People woman around. who creates the situation for her to be that way. आप एक पौधे में खूब पानी डालोगे, सूरज की रोशनी दोगे, वो उगेगा. एक पौधे को अंधेरे में रख दोगे, कोई रोशनी नहीं मिलेगी, कभी पानी खाना नहीं मिलेगा, तो वो नहीं खुलेगा. सिमिलरली वो पौधा एक बच्चा भी होता है, वो पौधा एक औरत भी होती है, वो पौधा एक आदमी भी होता है उस घर में. वेरी ब्यूटीफुली कोटेड मैम, वेरी ब्यूटीफुली कोटेड. एंड मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे ये आंसर मिल गया कि इस बात का क्या जवाब दे जब लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो 4-4 बच्चे हो गए, या पहले भी माएँ बच्चे पैदा करती थी. आई फील तब भी प्रॉब्लम्स थी, बात नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स तो तब भी थी. और मे बी यू डोंट इवन नो कि वो और भी गंदा शेप ले लिया हो उस टाइम पे उस चीज़ ने. एटलीस्ट अपने आसपास की महिलाओं को जो भी प्रेगनेंसी के फेज से निकल रही है, गिव देम दैट स्पेस कि वो उस बारे में बात कर पाएँ, खुल के बोल पाएँ कि उन्हें क्या हो रहा है, या ना भी बात करना चाहें तो एटलीस्ट वो स्पेस हो कि वो हील हो पाएँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक वुमेन की हेल्थ राइट ट्रैक पे है तो एक फैमिली की हेल्थ राइट ट्रैक पे होती है, बिकॉज बेबी इज कनेक्टेड टू मदर मोस्टली बिकॉज ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसीज एज वेल. So this is a great point, ma'am. At least I would request my viewers even to get this clarity. Let's not talk about कि पहले ऐसा होता था और अभी ऐसा होता है. Maybe पहले भी होता था, पहले भी problems थी, अभी भी होता है, अभी भी problems हैं. और अवेयरनेस टाइम के साथ ही आती है. एंड नाउ एटलीस्ट वी कैन से वी हैव रीच टू दैट पॉइंट कि हम इनफ ये बात कर सकते हैं. इतने हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं आसपास जो हमें रियलाइज भी करा रहे हैं कि इट्स नॉर्मल टू टॉक अबाउट स्टफ. Thank you so much for that, ma'am. Okay, moving ahead, and this is the last section of this interview, ma'am, for today. One message which you want to give to my larger audience कि आप अपनी mental health के लिए क्या कर सकते हैं, या before even reaching to you, what steps you can take at your level, because I feel a therapist brings a lot of therapy. तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि ये लाइफ में कुछ तो ये 3-4 पॉइंट से ध्यान रखिए which will make you better and better each day? I think, like I say, that 3 C's are very important. Before therapy, during therapy, even when you've got done with the therapy. Okay. Be caring to your own needs. Be caring about your own self, about your environment. Have compassionate self, think about your compassionate self. How much are you able to give that affection to yourself first and to the others? And third, we say always learn to collaborate with people. So care, compassion, and collaborate. Collaborate with your parent, collaborate with your friend. Reach out to someone, not therapist, but maybe your dear one with whom you can talk about your things. Care for your self-care that we say, starting with compassionate talking and collaborate. Being is very important for any mental health concern to never become a mental health disorder. If you Very lack true. in these 3 C's, then please reach out to people like us. Just to sum up, we can say it is care, compassionate and collaborate. हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए. और आई फील इस सेशन से मुझे तो काफ़ी मेंटल क्लैरिटी हुई है. एंड आई ऑल्सो फील इफ इन फ्यूचर इफ द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड वी विल हैव सम more sessions on child psychology. How do we shape that, how we can have that in place so that we can raise a better human being rather than a man with all the problems actually. Thank you so much, ma'am, for coming to this show and giving to all our viewers this time. I am very privileged and blessed to have you on this show, and thank you for coming. तो आखिरी में हमने क्या सीखा? हमने सीखा मन की सुनो, उसे अपनाओ, छोटे छोटे कदमों से उसे प्यार दो. जब खुद से दोस्ती करने लगोगे तो हर दर्द भी हल्का, हर राह भी आसान लगने लगेगी. With this ending note, I Anubhi Dubey, on behalf of Disha Samvad team, ending this podcast with a promise
of bringing more insightful and knowledgeable Samvad next time. If you like this video, please like, share and subscribe.